morning everyone. I am Science 4 and I am here with a new chapter which name is Tissue. And believe me, this chapter is going to be awesome again. Okay, now the basic question arises from by seeing the chapter name. What is tissue, ma'am? What is tissue? So the basic definition of tissue is a group of cell. It is a group of cell which is specialized to perform a specific function. सेल टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं ताकि वो कोई भी एक अपनी बॉडी में कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शंस कर सके, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. अब आप कहेंगे मैम एग्जांपल दो कि टिश्यू क्या क्या होते हैं. सो फॉर दैट एग्जांपल ऑफ टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, राइट, इन ह्यूमन बॉडी. जैसे आप अपना हाथ हिला पा रहे हैं, आप अपना पैर हिला पा रहे हैं, वो आप मस्कुलर टिश्यू की वजह से हिला पा रहे हैं. नर्वस टिश्यू, आपका ब्रेन में जो टिश्यू पाया जाता है उसे हम नर्वस टिश्यू कहते हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द टिश्यू. नाउ लेट मी टॉक अबाउट मैम एनिमल्स में भी टिश्यू होते हैं, प्लांट्स में टिश्यू नहीं होता है. तो बेटा प्लांट्स में भी टिश्यू होता है. सो फॉर प्लांट टिश्यू को हमने दो भागों में डिवाइड किया है. प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट. First one is meristematic tissue. What is meristematic tissue? And second one is permanent tissue. Permanent tissue. आपको एक बात जान के बहुत हैरानी होगी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जब वो अपनी डिवाइड करने की शक्ति को खो देते हैं तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं. तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल, क्योंकि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल विच हैज ए परमानेंट शेप एंड साइज. मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकता, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड नहीं हो सकता उसे हम परमानेंट टिश्यू कह देते हैं. तो मैम इनमें क्या कुछ डिफरेंट हुआ? हाँ बेटा हुआ, क्योंकि परमानेंट टिश्यू बना इसी से है, ओरिजिन ही है, लेकिन इसका फंक्शन अलग है. जिसमें से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये क्या करता है, मेनली फंक्शन द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये मोस्टली ग्रोथ कराता है किसकी, प्लांट की, उसकी स्टेम पार्ट से, उसकी रूट्स पार्ट से. और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको तीन भागों में बांटा गया है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. व्हाट आर दे? एपिकल, इंटरक्लैरी, एंड लास्ट वन टाइप ऑफ ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लेटरल. और जबकि जो परमानेंट टिश्यू है उसे भी तीन भागों में बांटा गया. परमानेंट टिश्यू इज आल्सो डिवाइडेड इनटू three parts. First one is parenchyma. These are the cavities present in the plant. First is parenchyma. Second is collenchyma. Flexibility जो होती है पौधे की, जैसे विंड फ्लो करती है पौधे से तो पौधा क्या होता है, टूटता नहीं है, वो बैंड हो जाता है, तो वो होता है collenchyma, क्योंकि flexibility of plant is collenchyma. Now let's move to another, that is collenchyma. Next is sclerenchyma. आपने कभी कोकोनट देखा है? एब्सोल्युटली देखा होगा. होली पे तो कोकोनट हम सबसे ज्यादा खाते हैं. तो जो कोकोनट की जो बाहर की स्किन होती है वो हार्ड होती है, तो वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टिश्यू. लेट अस स्टडी अबाउट दिस टिश्यू इन डिटेल. में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे आपके. नाउ लेट मी मूव टू अनदर. प्लांट टिश्यू इज कम मार्क्स का आता है, और जबकि जो वो होता है एनिमल टिश्यू वो ज्यादा मार्क्स आता है पेपर में. तो कई यूट्यूबर्स को मैंने देखा है वो सिर्फ है ना एनिमल टिश्यू को पढ़ाएंगे, वो प्लांट टिश्यू को पढ़ाते ही नहीं है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इसका बहुत इंपॉर्टेंस आता है. क्या हुआ ये पेपर में नहीं आता. तो नाउ लेट मी मूव टू द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. पहले मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में टाइप्स बताती हूँ, उनकी टाइप्स की डिटेल बताती हूँ, और फिर मैं आपको परमानेंट टिश्यू के बारे में बताती हूँ. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है तीन टाइप का. हाउ मच टाइप? थ्री टाइप. Now let me know about that type. Meristematic tissue. First is apical. मैंने आपको बताया था apical meristematic tissue. Second one is intercalary, जो कि बीच में प्रेजेंट होता है. And next one is lateral. Lateral जो होता है it is present. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? It is present between the leaves, ये लीव्स के और इंटरनोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लीव्स एंड इंटरनोड्स. जो एपिकल टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट, एपिकल
present, where apical tissue is present in top part of stem and root. जो apical mesmatic tissue है वो top part of stem and root में present होता है. अब आप कहोगे मैम ये present तो होता है बट ये function क्या करता है? तो it increase the length of plant. Increase the length of plant. ये जो कोई भी प्लांट होता है उसकी लेंथ को क्या करता है? इंक्रीज करता है. तो आप कहोगे मैम इंटीग्रली क्या करता है? बेटा कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों ग्रोथ का काम नहीं, ये दोनों ग्रोथ का काम नहीं करते, ये दोनों अलग अलग है. ये लेंथ को इंक्रीज करता है जिसके बाद ये ग्रोथ ऑफ सेल करता है. इट इज ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट. ये करता है ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट. कैसे ग्रोथ करता है? बाय डिवाइडिंग द सेल. बाय डिवाइडिंग द सेल ये क्या करता है? ग्रोथ करता है. ओके. लेटरल एनसीईआरटी में इनके बारे में इतना ही डिस्क्रिप्शन है. आगे इनका बहुत बड़ा पार्ट आप 11th क्लास में पढ़ेंगे. एंड इन बोटनी इट विल गो इनटू ग्रेट सेशन व्हेन यू आर देयर. नाउ लेट मी टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्लांट टिश्यू, दैट इज परमानेंट टिश्यू. यू ऑल नो आर अवेयर ऑफ परमानेंट टिश्यू. क्योंकि परमानेंट टिश्यू तो हम सबसे ज्यादा जिसको जानते हैं वो परमानेंट टिश्यू ही है. सो लेट अस टॉक अबाउट द परमानेंट टिश्यू. Permanent tissue is of 3 types. Yes, why not? Permanent tissue कितने टाइप का है? 3 टाइप का है. First permanent tissue. पहला permanent tissue क्या होगा? आप गेस कीजिए. It's nothing. ये पहला permanent tissue होता है simple tissue. Simple tissue. And second one is complex tissue. अब जो simple tissue है उसे सिंपल टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया है. 1 2 3. सिंपल टिश्यू इज सेम एज दैट ऑफ द परमानेंट टिश्यू. और इसका एक टाइप भी कह सकते हैं हम. उसका टाइप है परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू. और सिंपल टिश्यू के अब 3 टाइप होते हैं. बट उसमें से पहला क्या होगा? पहला होगा पैरेन्काइमा. व्हाट इज पैरेन्काइमा? सेकंड इज क्लोरेन्काइमा. एंड लास्ट वन इज एरेन्काइमा. एरेन्काइमा. सो इनके अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जिनके बारे में जानते हैं. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वी ऑल नो अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम बचपन से पढ़ते आते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज जाइलम, राइट? फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकंड वन इज फोइलम. वी ऑल नो अबाउट देयर बेसिक फंक्शंस कि मैम ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है. बट अब आप 9th क्लास में हो गए हो, आपको एक लेवल अप हो गया है. तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जाइलम को 4 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट इज जाइलम ट्रेचाइस, सेकंड इज जाइलम वेसल जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा. सेम हैपेंस टू फोइलम. फोइलम को भी 4 भागों में बांटा गया है. इसके मैं ऐसे लिखूं क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है. सो फर्स्ट इज कंपेनियन सेल, राइट? व्हाट इज कंपेनियन सेल? सेकंड इज सीव ट्यूब, इसको सीव ट्यूब में बांटा गया है. एंड थर्ड वन इज कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एंड लास्ट वन इज फाइबर एंड देन पैरेन्काइमा. इसमें फाइबर को जोड़, फाइबर होता है इसमें डेड सेल जिसमें से वो सारे लिविंग होते हैं, जिसमें से इसमें सिर्फ फाइबर लिविंग होता है और सारे क्या होते हैं? डेड होते हैं. तो ये इनवर्स होगा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो. नाउ लेट मी टॉक अबाउट द पैरेन्काइमा. What do you know about the parenchyma? The basic questions arise here. What is parenchyma? So for that parenchyma, there are the cavities. These are the cavities present. Hole-like structures जो कि आप plants में देखते हो, present in plant होते हैं, उनको हम parenchyma कहते हैं. और अगर जब इन air cavities में, these are the air cavities. अगर air भरी हो cavities में तो parenchyma. और अगर if chlorophyll, अगर हम उसमें क्लोरोफिल फिल्ड हो जाता है इन कैविटीज में, इफ क्लोरोफिल इज फिल्ड इन कैविटीज, अगर हम कैविटीज में क्लोरोफिल फिल कर दें तो ये क्या होता है? क्लोरेन्काइमा. और अगर इन एक्वेटिक प्लांट्स, एरेन्काइमा किसमें होता है? सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स में होता है. इन एक्वेटिक प्लांट्स इन होल्स के बीच में ना एयर भर जाती है. होल्स हैव एयर हो जाती है टू हेल्प देम फ्लोट, जो कि उन्हें फ्लोट करने में, to help them float.
जो कि उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करती है. So these are the basic types of our plant tissue. Plant tissue is divided into two parts: mesomatic tissue, permanent tissue. Permanent tissue has two subparts and we have derived all about that. Now let me move to the next. What is the next topic, ma'am, you are going to teach? So the next topic is going to be an important topic, and next tissue, that is animal tissue, that is present in us. We are animals in the language of bio. वैसे तो हम कुत्ते को जानवर कहते हैं, right? Now let me move to our next tissue, that is animal tissue. Ma'am, what is animal tissue? Animal tissue is that tissue that is present in you and me. These are the simple tissues. Now let me talk about the animal tissue. Animal tissue is divided into four parts, right? Animal tissue is divided into how many parts? 1, 2, 3, 4. 4 parts animal tissue is divided. Now let me name the first animal tissue. First animal tissue is epithelial. What is this? Epithelial tissue, ma'am. And the second one is muscular tissue that help us in movement. आप अपना हाथ हिला पाते हैं, पैर हिला पाते हैं, और due to the presence of this tissue. Next one is connective tissue. Connective tissue makes us the connect to our bones, ligament. Connective tissue is an important tissue. Many questions arises from this tissue. And the last one is nervous tissue that is present in our brain. Now let me talk in detail about everyone. First I will want to talk about the epithelial tissue. We all know about epithelial tissue. Epithelial tissue is the, what is this? It is the outer covering of the body. Epithelial tissue is the outer covering of body. Just like you and me, look at our skin. This is the epithelial tissue. जो हमारी स्किन है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है. It is the outer covering of our body. Now let me move to the second part. It is only present in the covering of the body? No, it is present in the lining of mouth. It is present in the lining of the mouth. Yes, skin. Also our lungs are covered by this tissue. This is present in this type of tissue. Epithelial tissue has also subparts. Squamous epithelial tissue. You know about squamous epithelial tissue? This is going to be a new tissue that arises from the epithelial tissue. Squamous epithelial tissue attached to basement membrane. जो ये स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू का एक सब पार्ट है और ये अटैच होता है किसके साथ? अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो एपिथेलियल टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके साथ ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है. It is attached to basement membrane. Now you know what squamous is, just like sphere. They are sphere shaped and they are attached to basement membrane. It has nucleus, fluid is filled between them. This is the example of squamous epithelial tissue. Now let me move to our next tissue, that is cuboidal epithelial tissue. Ma'am, where is this found? The cuboidal epithelial tissue. Where is it found? Interesting question. It is found in the outer lining of kidney. जो आपकी किडनी है उसकी जो outer lining है उसमें ये पाया जाता है. It is found in the outer lining of kidney and it is also found in tubules and ducts. Ducts of salivary gland is made up of cuboidal epithelial tissue. These are the places. और कई बार इन्हीं में से क्वेश्चन आता है कि कहाँ प्रेजेंट होता है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये ऐसी थ्योरी दे रखा है तो बच्चे इसको इग्नोर मार के चले जाते हैं. बट दीज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. नाउ लेट मी टॉक अबाउट द cuboidal. These are cube shaped. These are cube shaped. These are of 3D structure. This is square shaped. They are of 2D structure. These are square shaped. These are of these type of structures and arise to a basement membrane. Right? These are the types of the epithelial tissue and I have said it to details to you. Now let me talk about the next important tissue, that is muscular tissue, and because of this tissue helps us in our movement and we also move by this tissue. Now let me come to the next tissue, that is muscular tissue. Movement. अब मैं बोर्ड पे लिख पा रही हूँ, अपना हाथ हिला पा रही हूँ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टिश्यू. अगर ये टिश्यू नहीं होता
तो मैं ऐसे हूँ ना, मेरा हाथ ऐसे ही रहता, वो मूव नहीं कर पाता। जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो 3 टाइप का होता है। मस्कुलर टिश्यूज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वॉल्यूंटरी मसल्स, फर्स्ट वन इज वॉल्यूंटरी मसल्स, voluntary muscles, involuntary muscles, next one is involuntary muscles. इसको मैं थोड़ा उर्दू करती हूँ, और this is cardiac muscles. So ma'am, the question arises, ma'am, what is voluntary muscles and what is involuntary muscles? So for that, kids, voluntary muscles that act according to our will, जो कि मेरी इच्छा से काम कर सकती है, act according to our will. जैसे कि मैंने अपना ये हाथ उठाया, मेरी मर्जी थी, उठाया, तो दिस इज वॉलंटरी मसल्स। ये हाथ उठा लिया, ये हाथ उठा लिया, ये फिंगर उठा ली, तो दीज आर वॉलंटरी मसल्स। हैंस इट इज फाउंड, सो इसकी पोजीशन क्या हुई, हैंस इट इज फाउंड इन हैंड्स, लेग्स एटसेट्रा, दीज आर द पोजीशन। वॉलंटरी मसल्स आर आल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स, सॉरी स्केलेटल मसल. These are also known as skeletal muscles because they are attached to our skeletal system, hence they are called skeletal muscle. They do not act according to will. They do not act according to our will. ये अपनी मर्जी से काम कर सकती हैं। जैसे कि आप कहो आज आप अपने स्टमच को कह दो कि आज मेरा खाना खाने का मूड नहीं है, तो आप अपने स्टमच को कहोगे कि आज तो खाना मत पचाना, तो वो क्या आपके विल के अकॉर्डिंग काम करेगा? नहीं, वो बिल्कुल भी आपके विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। सो फॉर दैट दिस इज द टाइप ऑफ इनवॉलंटरी टिश्यू। इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं स्टमच में, सो वी कैन दे स्टमच हैव इनवॉलंटरी मसल्स। ओके, और किडनी, किडनी की आउटर लाइनिंग तो होती है एपिथेलियल टिश्यू की, बट जो टिश्यू होता है उसकी बात मतलब स्टमच के कारण होता है, स्टमच, किडनी एक्स्ट्रा। ओके, नाउ लेट मी मूव टू द इंपॉर्टेंट मसल्स, कार्डियक मसल्स. Do you all about cardiac muscles? Cardiac muscles are present only in our heart. These are present only in our. These are present only in our heart. Okay? आप एक दिन के लिए कह दो कि सुन दिल मेरे आज से धड़कना मत, तो ऐसा हो सकता है? या फिर आपने कभी देखा है, कभी आपके हार्ट ने आपको बोला हो कि अब तो है ना मैं बिल्कुल नहीं धड़कूंगा, मैं तो थक गया. They are never tired. What are never tired? Cardiac muscles. Cardiac muscles never tired. ये muscles कभी tired नहीं होती. Never tired. Example, these are present only in our heart. सिर्फ हमारे heart में नहीं पाया जाता, ये कभी भी नहीं थकती, कभी भी. आप थक जाते हो, आपका हाथ थक जाता है, सब थक जाते हैं, लेकिन these never tired. Okay. Now let me make the structure. It of this like this structure. What about voluntary muscle structure? Voluntary muscle structure is just like this is nucleus, this is trapezius, and these are the structures of this muscle. Structures कोई ज़्यादा पूछता नहीं है इस चैप्टर के, तो इसलिए जो क्वेश्चन आता है पॉइंट टू पॉइंट करना चाहिए हमें, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट करा रही हूँ. So muscular tissue, you all need about this, read about this, and it is of great importance also. Now let me move to our next tissue, that is connective tissue. You will say, ma'am, what is connective tissue? Connective tissue join your bone to bone. Connective tissue is also of many types. First of that is blood, right? Blood, plasma. Next one is plasma. Adipose, right? Adipose, areolar. Areolar connective tissue, adipose connective tissue, plasma connective tissue, blood connective tissue. These 4 types of connective tissues are present in your NCERT book, so I have to read all this. Blood. In blood is made up of WBC, right? RBC and platelets, right? Blood used to transport of material. ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है, और यह कनेक्टिव टिश्यू है. ओके, दिस इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. नाउ व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स. प्लाज्मा इज a fluid matrix. It also a type of connective tissue. Adipose, it store. Adipose connective tissue, it helps to store fat and protein. ये फैट और प्रोटीन स्टोर करने के क्या आता है, काम आता है. What about aerial and connective tissue, ma'am? Aerial connective tissue also,
This is a question for you. Yes, I will not going to tell about it. ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मुझे पता चलता रहे आप कितने अटेंड हो और कितना पढ़ते हो और आई विल टेल यू इट कमेंट्स. ओके, नाउ टेंडन, you know about tendon and you know about ligament. These are two types of connective tissue. So tendon, बहुत से बच्चे में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा बोन टू बोन करता है तो कौन सा बोन टू मसल्स करता है. तो आई वांट टू से दैट लिगामेंट, लिगा फॉर बोन्स. सो इट प्रोवाइड्स ए बोन टू बोन कनेक्शन, राइट. एंड टेंडन, टेंडन व्हाट कनेक्ट्स इट? इट कनेक्ट्स बोन्स टू मसल्स. यह बोन से लेकर हमारी मसल्स तक को कनेक्ट करता है. These are the types of connective tissue: plasma, adipose, areolar. Now let me talk about the next important tissue, that is nervous tissue, that is found in your brain. Pulmonary tissue, I should erase this, you have all made it, right? So let me know about your nervous tissue. So let me start. Nervous tissue, right? Let me start about nervous tissue. Write the points that I said in written form. Okay, this is going to be your notes, and in my standard notes are of great importance. So see childs, make a neuron, because in this chapter the most important diagram is of neuron, that also comes in 10th class, 11th class and in 9th class. So this is a tissue, right? This is just like that, ऐसे ऐसे ऐसे. अब आप कहोगे मैम ये आपने क्या निकाल दी, मेरी ड्राइंग तो नहीं खराब होगा, माइंड मत लेना. ओके, and this is the myelin sheath that is covering on it. Okay, now let me tell you the structure. The last point is, what are these? These are synapses. These are synaptic nodes. Synaptic nodes are present at the end of neuron. These are synaptic nodes. What is this, ma'am? This is myelin sheath. It have to protect the neuron. आपका जो ब्रेन है उसमें क्या होते हैं, एक न्यूरॉन के बाद एक न्यूरॉन होते हैं, एक न्यूरॉन के बाद बहुत न्यूरॉन होते हैं. नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन जो होता है वो आपका ब्रेन बनाता है, और जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम साइनेप्स कहते हैं, जो कि साइनेप्टिक नोड के द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा इसे ट्रांसफर किया जाता है. ओके ओके, इस माइलर शीथ के बीच में एक और सेल पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं सेक्वन सेल, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस मैम? These are called as nodes of Ranveer, not Ranveer Kapoor, it's Ranveer. Okay, okay. Now what are these long structures, ma'am, that are ahead of this neuron? So for guys, that is dendrites. ये क्या है? ये dendrites हैं. इन्हीं की वजह से जो पिछले न्यूरॉन जो साइनेप्टिक नोड से जो न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ेगी वो इनकी वजह से क्या होंगे, लिए जाएंगे. So this is the neuro diagram that is completed. But ma'am, you forgot to make the most important. What is the brain of the cell? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था nucleus. This is our nucleus. So let me made it nucleus. Also some components are also present whose one's name is Nisha's granules. Nisha's granules. So this is the first diagram of nerve tissue. अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है मोस्टली, तो अगर आप ये डायग्राम बना के आते हैं तो इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग. द एग्जामिनर्स विल गिव यू फुल मार्क्स. दिस इज दिस एक्सोन, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सोन एंड दिस इज द पार्ट ऑफ सेल बॉडी. इट इज सेल बॉडी. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स आल्सो. नाउ कुछ टर्म्स रह गए थे जिसके बारे में हमें बताना था, तो लेट मी टॉक यू अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन दिस चैप्टर that come in the theory and question arises from that, and some students keep it just as a part, but we will not skip as I am teaching you. So for that, the first term is, let me write the terms, we are discussing all the terms. First term is epidermis. Now you say, what are epidermis cell, ma'am? What is epidermis? I am also so confused about it, but now you also not need about confused it. These are epidermis cells. Outermost covering of the cell, outermost covering of the cell, किसी भी सेल की outermost covering is called epidermis cell. Now let me talk about the important topic, stomata.
questions always come from this stomata. Important. Question must come from its stomata. What is stomata? It is guarded. It is guarded by guard cells. ये गार्ड सेल्स के द्वारा क्या होता है? गार्डेड होता है. मैम, जो हमारा ये स्टोमेटा होता है ये काम क्या करता है? जो आपने ये कहते हैं कि इसमें से इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन आएंगे, तो फॉर दैट स्टोमेटा गार्डेड बाय गार्ड सेल्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ वाटर, हेल्प्स इन exchange of water and gases, exchange of water and gases, exchange of water and gases. अब कई में आप कहेंगे मैम जो जाइलम होता है वो भी ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, तो मैम आपने इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया? सो फॉर दैट बिकॉज इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ये काम करता है, इसलिए इसका इतना इंपॉर्टेंस है. नाउ लेट मी मेक द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. दीज आर द गार्ड सेल्स, राइट? These are the guard cells. These are the guard cells. Okay. Now here the which is called stomata. Also some cells are also present here, and this is the structure of stomata. So this is all about our chapter whose name is tissue, and I hope you all must enjoy it. So for now it's all right. Please share, subscribe my channel, and for you my only opinion is that work hard in nights. The last thought of the day, work hard in nights. रात को हार्ड वर्क करो. वर्क हार्ड इन नाइट्स, इन साइलेंस. चुपचाप अपना काम करते रहो, चुपचाप और लगन से जो अपना काम करेगा. लेट योर डेज मेक नॉइस. उसी के जो दिन में आपकी कामयाबी का ढंगा फिर जब बचेगा. सो वर्क हार्ड इन नाइट्स, इन साइलेंस, एंड लेट योर डेज एंड योर नॉलेज मेक साइंस. So for now, bye guys. May have you enjoyed the session. So please like, share and subscribe. Don't forget.